आजकल आपने काफ़ी निब्बा निब्बियों की लड़ाई देखी होगी यार। ये जो आजकल इस कोठी बंगले वाले हैं अपने आप को ये कहते हैं कि यार ये मेरी एक्स से लड़ाई हो गई। तो ये वही वाली एक स्टोरी है। ये एक ऐसा ही केस है जहाँ पे क्या हुआ था कि एक यूएस में एक लड़की थी या इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था। ये इसके दरवाजे पे आके ये दरवाज़ा मारे जा रही थी। इसकी माँ ने परेशान होकर एक पुलिस वाले को कॉल कर दिया कि भाई ये क्या दिक्कत है, कि इसको लेके जाओ। अब जैसे ही देखिए पुलिस वाला पहुंचता है इसके पास, देखिए फिर क्या हुआ। Do what? No? Ma'am, step away from the door. ये इसकी माँ समझाया जा रही है कि यार भाई मत कर, क्यों इतना, हम इनको परेशान नहीं करना चाहते यार, ये इसका अपना फ्यूचर है, पर इसको आप ले जाइए। पर ये समझने को तैयार नहीं है कि भाई मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। इसका मकसद पता नहीं क्या है, ये क्या ड्रग ले रखा है इसने पता नहीं। और ये खड़ी हुई है बुंद बन के कि भाई अब मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से। My son, and I don't want him coming out of here because I don't feel safe with her, with him. Okay. Ma'am, what is your name? Ma'am, what is your name? I don't want her in trouble. I just want her to understand she's not welcome Okay. here. What's her first name? Since she doesn't want to answer me. Sandra? Samantha. Samantha? Samantha, are you hearing what she's saying? Hello? Samantha, do you have your driver's license, your ID with you? Okay, this is going to last for a couple more minutes till my other deputy gets here, and then she's going to have two routes. One, she's going to answer me, or she's going to go to jail. Answer him, or you're going to leave. Okay? Oh, no, she's going to go to jail. Okay, so please, that's not what we want. Just give me your driver's license. Okay, I don't have it with me. देखिए ये बंदा उसको समझा रहा है, इस पर चिल्ला उठती है। अब ये ऑफिसर भाई क्या करेगा, ऑफिसर समझ गया कि भाई ये पागल हो चुकी है या सरक चुकी है। अब इसको वो काम करने की कोशिश कर रहा है। All right? What is your last name? Amanda, what is your last name? Samantha, if you keep obstructing him, he is going to put you in cuffs. Just give him the information. This is mom. And leave. This is ex-boyfriend, and this is You need to go inside. it's Samantha, correct? Samantha. And this is Samantha, who's not wanting to answer any questions or have anything to do with police, and refusing to leave with her telling us she wants her to leave. Samantha, you're currently trespassing. Do you have ID on you? You don't? Or are you not going to provide it? I don't have it. Okay, I'm asking. No. Do Are you your going to registration leave? in your car? You have your registration in your car. Can you run Or that you are- tag right there in that car? I'm showing about to show your registration. Are you going to leave right now off this property? Is this her car right here? Yes. Okay. Is that a yes or no? Sam. I'm not going to ask you again. Sam. अब यार ऑफिसर परेशान होकर आखिरी वार्निंग दे रहा है कि भाई हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप निकल जाओ। और इसकी माँ इसको समझाया जा रही है कि भाई देखो, ये समंथा इसका नाम है, कि भाई ये आपके फ्यूचर के लिए ठीक होगा, आप पे कोई केस नहीं लगेगा, यहाँ से चले जाओ। पर ये मान नहीं रही है बंदी, और ऑफिसर ने आखिरी वार्निंग दे दी है। Very respectful and calm with you and giving you the chance to go to your home and deal with whatever it is that you need to deal with today. And not be here and get yourself in trouble. It's not worth it. You just can't stay here. That's going to cause you problems later. If you get arrested, then you got to go back to court. Then you're considered a stalker. Then you're obstructions of justice, not listening to a police officer. Are you going to leave right now? Please leave. And do not come back. Is that a valid deal? Yes or no? Okay. So you heard her. She wants you trespass from this point. It's on camera. If you come back on this property and we catch you here, you go to jail. सर देखो उसको आखिरी वार्निंग दे रहा है। अब उसने कैमरे पे, क्योंकि यूएस में देखिए कैमरा लगा के रखते हो, सारी फुटेज रहती है उनकी लाइव। अब देखिए वो उसको वार्निंग दे रहा है कि भाई उसमें आपने कैमरे में बोल दिया, अब उसके बाद अगर आप आए तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूँगा। वो आखिरी वार्निंग दे के उसको जाने के लिए बोल रहा है। I just know she's young and dumb, and I would hate to see her mess up. माँ ये बोल रही है कि भाई ये थोड़ी यंग और डम टाइप की है, तो भाई ये बहुत डेंजर भी हो सकती है। तो उसको अब देखिए, अब जैसे इसने ये वर्ड बोला और इसने हरकत कर दी, और वो देखिए गाड़ी की व्हील्स पे उसने मारी, और भाई ऑफिसर समझ गया। अब इसके पीछे देखिए जा रहे हैं। You're welcome. She just blew through that stop sign. Go get her. She's gonna kill somebody. Yep.
अब ये देखिए भागते जा रही है और इसे काफ़ी सिग्नल्स तोड़ दिए और कोई भी टर्निंग पे रुकी नहीं है। अब ये भाई ये वैसे भी फंस रही है और इसने सारे चार्जेस अपने ऊपर ले लिए हैं और रुक भी नहीं रही है। 48, we're continuing 27, 40 miles an hour. 1033. Alright, speaking like I'm behind him. We're 50 and a 50 in the slow lane. We're slowing down. We're coming up to West Virginia Street. Turn the car off! Turn it off! रोक लिया है, फाइनली इसको रोक लिया है। अब ये बोल रहे भाई कि अब तू गाड़ी रोक दे और बाहर निकल। अब जो भी पकड़ा जाते हैं फिर उसके बाद यही बोलते हैं भाई कि मैंने तो कोई गलती नहीं की। अब देखिए ये फिर से पकड़ लिया। Unlock the door. Get on the car! What did I do? Get on the car! Oh my God! What did I do? What did I do? Give me your hand. What did I do? What did I do? What did I do? Don't move! What did I It's do? over. What did I do? How about run a stop sign, squeal your tires, and you fail to yield? Now you're under I arrest. didn't fail to you. Yes, you did. Yes, you did. No, I did not. Get up. All right, now you can get against the car. Can you guys explain to me what did I do? Come over here. Turn Can around. you guys explain to me? He just what did I told you do? what you did. I did not fail to yield. देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भाई हमारे यहाँ तो लड़कियाँ जैसी चिल्ला चोट करती है तो लड़के वैसी माफ़ी मांग लेते हैं। यहाँ कुछ होता है, पुलिस केस तक बात पता नहीं जाती नहीं। पर यूएस में देखिए अब ऐसा होता है कि लड़कियाँ जैसी हरकत कर रही है इस पे केस बना देते हैं और उसको वार्निंग भी देते हैं और चार्जेस भी बहुत तगड़े बनाते हैं। तो मे बी ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, पर जैसे भी ये लॉ है ये अब देखिए ये ऐसी कुछ निब्बा निब्बे की स्टोरी आपको पता हो कि भाई यार ये ऐसी कहानियाँ आपको पता हो तो भाई कमेंट्स ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे क्राइम स्टोरीज़ या आपके ऐसे पसंद आता है तो डिटेक्टिव देव को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और ऐसी मेरे वीडियोस देखते रहे। थैंक यू।